everyone, welcome to Ecoholics. In this video, we are going to study concepts of revenue. So, let's get started. Coming on to the definition of revenue. What is revenue? Now, revenue is the money payment received from the sale of a commodity. So, it is the money payment received from the sale of commodity. To understand this definition better, let's take an example to understand this. Let's say if there's a producer who sells 10 units of a commodity and from selling this 10 units of a commodity, he receives rupees 10,000. So what is this rupees 10,000? This rupees 10,000 is nothing but it is the revenue. रेवेन्यू सिंपल टर्म्स में क्या है? जब हम एक कमोडिटी को सेल करते हैं उसके बदले में जो भी हमें मनी रिसीव करते हैं उसे बोलते हैं रेवेन्यू. नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, आर प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स? तो क्या प्रॉफिट्स और रेवेन्यू अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं? तो इसका क्लियर आंसर है यस. प्रॉफिट्स एंड रेवेन्यू दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट्स और रेवेन्यू को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं. ना प्रॉफिट्स क्या होता है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉफिट्स आर. व्हाटएवर अ प्रोड्यूसर अर्न्स अबव कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट के ऊपर जो भी कुछ एक प्रोड्यूसर अर्न करता है वो होता है प्रॉफिट. या सिंपल टर्म्स में प्रॉफिट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट्स are equal to revenue minus cost. तो ये होता है profits. So profits is equal to revenue minus cost. But what is revenue on the other hand? So revenue is profits plus cost. So revenue is cost plus profit. So we can see that clearly profits and revenue are different concepts. Now coming on to types of revenue. There are three types of revenue. First, total revenue. Second, average revenue, and third, marginal revenue. Now, let's understand them one by one. Total revenue. The definition states it is the total or aggregate of the proceeds to the firm from the sale of a commodity. Now, let's understand total revenue with help of an example. Let's say if a producer sells 10 units of a commodity, and let's say this 10 units are of pen. A producer sells pen, right? Now each pen costs rupees 5. So this is price per unit. So what is going to be our total revenue in this case? Our total revenue is going to be equal to, so total revenue will be equal to, so the formula for total revenue is price into quantity. So in this case, our total revenue will be equal to P into Q. So our price per unit, that is equal to 5 multiplied by quantity, that is 10 units. So this is equal to 50. So in this case, our total revenue is equal to 50. So this is a very simple concept. Now, coming on to average revenue. What is our definition for average revenue? So the definition for average revenue is the revenue per unit of output sold, or the formula
is AR is equal to TR divided by Q. That is, average revenue is nothing but total revenue divided by the total units sold by a seller. Now, again taking the same example, what we have seen is a producer sells 10 units of pen and each pen cost rupees 5. So our total revenue was what? Our total revenue was equal to price into quantity, that is 50. So rupees 50 was our total revenue. Now, when we need to find average revenue, the formula is total revenue divided by total units sold. So, our average revenue will be equal to 50, that is our total revenue, divided by Q. So, how many units were sold? 10. So, average revenue in this case is equal to 5. Right. So, average revenue is equal to 5. So, now the interesting thing over here is average revenue is also equal to rupees 5 and the price is also equal to rupees 5. So, now later on in this video, we are going to see how AR is equal to P. Now, next is the most important concept, that is of marginal revenue. Marginal revenue is the addition that is made to the total revenue when one extra unit of output is produced. So, we have three keywords over here, that is addition made to the total revenue when one extra unit of a commodity is sold. So, the formula for marginal revenue is delta TR, that is change in total revenue by change in quantity, and the other formula for marginal revenue is TRN, that is total revenue of nth unit minus the total revenue of n minus 1 unit. So, let's look at these formulas with help of an example. Now, what is marginal revenue? Let's say when 10 units of a commodities are sold. तो जब एक प्रोड्यूसर 10 यूनिट्स सेल करता है तब उसका रेवेन्यू है कितना? उसका टोटल रेवेन्यू लेट्स से 10,000 है एंड जब वो 11 यूनिट्स सेल करता है तब लेट्स से उसका टोटल रेवेन्यू है 11,000. ठीक है, तो टोटल 10 यूनिट्स जब वो सेल करता है तब उसका टोटल रेवेन्यू 10,000 है एंड जब वो 11 यूनिट्स सेल करता है तब उसका टोटल रेवेन्यू 11,000 है. तो इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू क्या रहेगा? सो जब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो जब वो ये एक्स्ट्रा यूनिट जब प्रोड्यूस कर रहा है मतलब 10 यूनिट्स पहले प्रोड्यूस करता था एंड अब वो 11 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुआ है. सो ये एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस हुआ है. तो इस एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोड्यूस होने से टोटल रेवेन्यू में कितना एडिशन हुआ है, तो इसे करने के लिए हम ये दो फॉर्मूलाज यूज करते हैं. सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू कैलकुलेट आवर मार्जिनल रेवेन्यू? सो द फॉर्मूला फॉर मार्जिनल रेवेन्यू इज marginal revenue is equal to total revenue of n units minus total revenue of n minus 1 units. So in this case our n is equal to 11. So our marginal revenue will be equal to total revenue of 11 units minus total revenue of n minus 1, that is 11 minus 1 is 10 of 10 units. This will be equal to, so
when 11 units are sold, our total revenue is 11,000. Minus total revenue of 10 units. जब 10 units से commodity का sell करता है एक producer, तब उसका total revenue 10,000 होता है. And now 11,000 minus 10,000 is 1,000. So इस केस में हमारा marginal revenue है 1,000. So how are we going to interpret this? When one extra unit of output is produced, the addition that is made to the total revenue is 1,000 or our marginal revenue is 1,000. So this is what is marginal revenue. लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो एक फर्म होता है वो अपना आउटपुट एक यूनिट से नहीं बढ़ाता है, वो सेवरल यूनिट से अपना आउटपुट बढ़ाता है. उस टाइम पे ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. क्यों यूज नहीं कर सकते? क्योंकि ये टोटल रेवेन्यू उस यूनिट का एंड उसके प्रीवियस यूनिट का टोटल रेवेन्यू का डिफरेंस होता है. व्हेन अ फर्म इंक्रीजेस द आउटपुट बाय सेवरल यूनिट्स, उस टाइम पे द फॉर्मूला यूज्ड इज दिस, दैट इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय द चेंज इन क्वांटिटी. सो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो जैसे अब होता क्या है कि एक प्रोड्यूसर है, जब वो 10 यूनिट सेल करता है तब उसका टोटल रेवेन्यू 10,000 है. लेकिन जब वो 15 यूनिट्स सेल करता है तब लेट्स से उसका टोटल रेवेन्यू 20,000 हो गया. तो इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि 10 यूनिट से वो अब 15 यूनिट्स हो चुका है. सो इट इज नॉट बाय एन एक्स्ट्रा यूनिट, इट इज बाय सेवरल यूनिट्स. तो इस केस में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. तो मार्जिनल रेवेन्यू इन दिस केस विल बी इक्वल टू द चेंज इन टोटल रेवेन्यू, मतलब द चेंज in the total revenue by change in quantity. अब इस केस में जो चेंज है टोटल रेवेन्यू में वो कितना है? 20,000 minus 10,000, that is 10,000 divided by quantity में कितने का चेंज आया? 15 minus 10, that is 5 units. And इसीलिए हमारा marginal revenue क्या हो जाता है? Marginal revenue in this case will be equal to 2,000. I hope you understand this concept of marginal revenue. So now we have seen the concepts of total revenue, average revenue and marginal revenue.